Hello everyone and welcome back. In today's video we are going to discuss about multiplication. Alright, so in the previous videos we were discussing how we can do simple multiplication, and in this video we are going to move forward and we're going to learn a new rule in which that if you multiply any number, any whole number with the number 10, ऑलराइट, अगर आप किसी नंबर को नंबर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू हैव टू राइट द ज़ीरो इन दैट नंबर ऑन द राइट साइड. ठीक है, इस चीज़ को हम जो है इस अगली एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे. आई वांट यू गाइस टू जस्ट keep this rule in the mind. For example, if we are multiplying it with the number 2, right, a whole number being multiplied with the number 10, the answer is going to be 20, and the rule says that you simply put the 0 next to it. All right, so let's discuss it over here. What is 10 times 3? If we write number 3 over here, that means इस number में कितने ones हैं? 3 ones हैं, right? और इसके हमने find करना है कि 10 times क्या बनते हैं. If I multiply 1 with 10, ठीक है, अगर 1 को मैं 10 से multiply करूँ सेपरेटली इन तीनों वंस को, तो क्या आएगा यहाँ पे? तीनों वंस की जगह 10, 10 एंड 10 ऐसे ही होगा. एंड व्हाट इज 3 टाइम्स 10? 1 2 3 टाइम्स 10 इज 30. राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज मल्टीप्लाई 13 बाय 10. अब इसमें आपको नंबर 13 दिया हुआ, ठीक है, और नंबर 13 को अगर हम वो करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास इसमें कितने वंस हैं? हमारे पास इधर हैं 3 वंस, तो हम 3 वंस को ऐसे ही लिख देते हैं. ऑलराइट, और हमारे पास कितने टेंस हैं? इसमें हमारे पास 1 10 है, तो हम यहाँ पे 10 की वैल्यू लिख देते हैं. What did I do over here is actually I place these values in the place value chart. ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल क्या है? 13 है, एंड इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? बाय द नंबर 10. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज 3 नंबर्स विद 1 1 1 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे आ जाएगा 10 10 और 10. लेकिन व्हेन वी मल्टीप्लाई 10 विद 10, तो हमारे पास क्या रूल था कि सिंपली हम 0 एक ऐड कर देंगे राइट साइड पे, तो ये 10 क्या बन जाएगा? इट विल बी 100. Alright, okay, so we have 3 tens over here, that means it becomes 30, and what we have in hundreds value, that is 100, तो हम इधर लिख देंगे 1. So that was a very simple way of telling you how we can multiply number 10 easily. Alright, next we have, let's multiply 3 by 20. अब 3 by 20 को multiply करना है, this is 20, right? इसको हम क्या करेंगे? हम इसको further simplify कर देंगे. We're gonna write over here 3 multiply by 20 की बजाय इसको हम क्या करेंगे? 2 times 10 कर देंगे. Alright, why did we do that? It would be easier for me to multiply the next number. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? मैं 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, एंड द आंसर विल बी 6. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आया मेरे पास? 6. एंड देन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द नंबर 10. 6 को 10 से मल्टीप्लाई की, दैट मीन्स कि सिंपली उसके नेक्स्ट हमने क्या पुट कर देना है? 0, सो दैट विल बी 60. ऑलराइट, or this is one of the method, or you can do it like this as well. आप इसको सिंपली 20 पुट करें और इसको यहाँ पे 3 पुट करें. 3 zeros are 0 and 3 twos are 6. Alright, that was also a method that we have been doing previously, but for now I'm just letting you know how you can simply do it mentally instead of going through all of this process. Alright, so let's move on to the next slide and practice some of the questions. So we have over here our 2-digit numbers. ठीक है, दोनों 2-digit numbers हैं, और इससे पहले हम 1-digit number को 2-digit number से मल्टीप्लाई कर रहे थे. फॉर एग्जांपल हम या तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, या हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट? बट वी वर नॉट मल्टीप्लाइंग बोथ 2-digit numbers. ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डू दिस, जिसमें हम 2-digit number से करेंगे,
तो before we start, let me put a place value chart over here ताकि हम different numbers को differently identify कर सकें. ठीक है? So let's write the numbers over here. सबसे पहले बड़ा number लिखेंगे, that is 26, and then I have 14, right? That's G. Then we put multiplication sign over here. Okay, so what we are gonna do is number 1 step में हम ones के साथ सबको multiply करेंगे. ठीक है? ones से multiply करना है. ठीक है? ये multiply का साइन में साथ पुट करें तो ones जो है वो मेरा है 4. 4 को पहले मैंने किससे multiply करना है? 6 से. Alright? 4 6 12. No, 4 6 24. So we write over here 4 and we give 2 in the carry. Alright? 4 6 24 और 4 यहाँ पर 2 हमने carry कर दिया. Alright? Next we have 4 being multiplied with the number 10. ठीक है? तो 4 2s are 8 and 8 plus 2 is 10. We are gonna write over here 1 and 0. ठीक है? So next हमने क्या करना है? Next हमने जो number multiply करना है वो है number tens में. ठीक है? तो next step क्या है? हमने number tens को multiply करना है. ठीक है? और हमारे पास tens क्या है? इधर 1. लेकिन before we have to multiply it with the tens number, we have to do one more thing, and वो क्या है कि we have to put a 0 या फिर put a cross sign before multiplying. क्या multiply करना है? Before multiplying the number 10. ठीक है? बल्कि आप इस स्टेप को यहाँ पर लेंगे. Alright? ये हमारा सेकंड स्टेप होगा. So what we are gonna do, we are gonna either put a 0 over here or a cross over here. For your understanding, I'm just putting 0 over here. जब भी आप tens की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, you're gonna put a 0 over here. ठीक है? अच्छा जी, next we are gonna multiply 1 with the number ones. तो 1 6 का क्या होता है? 6. और इसी 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर tens के साथ. And what is 1 multiplied by 2? It's 2. So let's add these two numbers together to find the final answer. 4 plus 0 is 4. 6 plus 0 is 6. And 2 plus 1 is 3. So we have the final answer over here, and that is 364. Alright, so let's look at another example. Or maybe we are gonna do it in the next video because this one is going to take a longer time. See you guys in the next video. Allah Hafiz.